dear children, welcome to your own Aakash BYJU'S NEET channel. A very good evening to my lovely set of students. I am Dr. Pankhuri Ma'am, your biology teacher, welcoming you to your favorite channel. Please hit the like button. I know you love Aakash BYJU'S NEET so much. Share this session with everybody, whether they are a 2023 aspirant, 2024 aspirant. Share the love, share the support, and thank you for joining the class. I can see some new students as well as some regular students. Aditi, always so good to have you. I read all the comments, all the appreciation every day. Aparna, Arpita, good evening. Ashwini, hello bachche. Prem Viswas, hello. Khushi Sinha, good evening. Poonam, Sachin is always there. Good evening बच्चों. आज हमारी बहुत ही important class है. जो बच्चे regularly जुड़े हुए हैं, अभी तक 8 classes हो चुकी हैं Organism and Population की. It is one of the biggest chapter in ecology. If you are wondering कि हम L8 तक पहुंच गए हैं, इस chapter को ढंग से समझना पूरी इकोलॉजी की एक अच्छी फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है. द स्ट्रॉन्गर योर फाउंडेशन इज, जितनी अच्छी आपकी नींव होगी उतनी ऊंची 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 इमारत आप बना सकते हो. अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन यू विल हैव टू थिंक ट्वाइस कि कहीं बिल्डिंग क्रैश तो नहीं हो जाएगी. सो it is advisable that when you start a unit, when you start, let's say any unit in biology, चाहे वो human physiology है, चाहे वो genetics है, चाहे वो biotech है, चाहे वो ecology है, शुरुआत में, to sink into the subject, give it a lot of patience, time and love, and then nobody can stop you from getting selected. Now people, I am meeting you for the first time. अगर आप मेरी कल की क्लास में नहीं थे, जिसमें मैंने सेल का चैप्टर स्टार्ट किया है, another very foundation laying chapter in biology. Cell is a generic chapter for both botany and zoology. Yeah, and I'm going to give it a lot of time and love and explain every bit of it ताकि हमें genetics और biotech में problem ना हो. तो आप लोग भी उस चैप्टर को जरूर अटेंड करें. It goes live with me every Monday and Wednesday 5 PM. Is that clear? So attend the chapter of the unit of cell biology also. Now people, coming back to something that was very surprising on Sunday, I hope you attended the paper discussion, paper analysis done on Aakash BYJU'S NEET channel. It was a 7 hours plus discussion wherein I and teachers of zoology, chemistry and physics discussed the paper. Bachcho, I also went to the exam center. We will show you the video will be put on the channel. You must have seen it, wherein I interacted with students at the center to take a reaction, to take a feedback कि पेपर कैसा था. और सारी जनता बहुमत यही कह रही थी कि botany paper, yes, I feel so happy that botany paper this time became the physics of the NEET paper. The tables turned after a huge span of more than 8 years. जब finally bio मुश्किल थी as compared to physics और chemistry. This year bio is going to, especially botany. बच्चों ने कहा कि zoology फिर भी ठीक थी, लेकिन बॉटनी में बहुत सारे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, AR क्वेश्चंस थे, एंड इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व द बॉटनी पोर्शन. अभी तक हम सोचते थे कि बायो में या बॉटनी में कम मेहनत करके रट्टे मार के हम सिलेक्ट हो सकते हैं. So I am going to be doing a lot of counseling and lot of sessions wherein we are going to analyze all aspects of the paper. तो अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आकाश बायजूस नीट चैनल एंड click on the notification button because ma'am is going to tell you the various facets, various aspects of this paper कि क्या lessons हैं, क्या हमें सीखना है NEET 2022 पेपर से, because now the times are going to change. 2020-2021 में पेपर was very easy. इस बार कट ऑफ में भी कुछ हो सकता है and we are going to update you regarding the cutoff, regarding your expected first rank score or what are the colleges against every score. Yeah, so subscribe to the channel and do not miss these huge informative sessions as we bring them to you. Yeah, Rohit, Rani, Afsar Khan, Rohit, now that is a very you should be aware of it till now. You can join the Telegram group and you get everything there.
Vansh Sharma, good evening. Please share the session with everybody. Let's start the lesson. Also people, now that you have realized कि paper अब उतना आसान नहीं रहेगा because now we are out of the COVID times and the filtration is going to start. अगले साल कुछ भी हो सकता है. You have to pull up your socks, people. I tell you, you have to pull up your socks. इसको बिल्कुल ना माने कि लास्ट के 6 महीने में 3 महीने में मैं तैयारी करूंगा and I will get selected. ऐसा होने के चांसेस कम हैं. अगर ऐसा किसी के साथ हुआ भी है 19, 20, 21 में, things have changed. I tell you, they have changed. I'm not going to put a rosy picture in front of you and tell you, ऐश करो, मत पढ़ाई करो, don't study NCERT carefully, don't revise NCERT like 10 or 20 times and you'll still get selected. Yeah, let's be closer to the truth. Let's fasten our seat belts and move in a strategic manner towards our goal. If you're really aiming for a medical college, and if you are really aiming for the medical college, you are clear about your aim, then you should download the Aakash, the only app in this country which has been created keeping in mind the NEET preparation. और इतनी scientific approach से ये app design की गई है by the experts of Aakash BYJU'S that whether the paper is difficult, it is moderate, it is very easy, the app is going to make sure, is certain your selection, your rank for a prestigious government medical college. Okay? Since years, Aakash BYJU'S has been creating the top ranks. पिछले साल हमारी first 3 ranks थी. इस साल भी आप अपने ही नजरों से, अपने ही दिमाग से देख लोगे that we are going to create the ranks once again. Yeah. So when you have years and years of experience in creating the top ranks, you don't want to miss on the Aakash BYJU'S app as well. So people, before we start the chapter, the topic for today, let's like the session, share the session and subscribe to the channel. And if you have any questions and concerns, please make the best use of the comment section. Every comment you put, it is read carefully, analyzed by the Aakash BYJU'S team and your ma'am. Okay, I'm always here for you. Now people, in the last class, we spoke about the growth models, didn't we? People from the last class. Good evening. अभी भी good evening चल रहा है. Namaste, good evening. Khushi Sinha. Shiva, can we paste the Telegram link? Beta, Khushi, be a part of the Telegram channel. That's where you get everything. Rohit, अगर ऐसा है, put your comment in the main comment section. लेकिन अभी पढ़ाई कर लो. We are good with the chat. तो बच्चों, हमने ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ी थी पिछली क्लास में. हमने ये गौर किया कि यार हम अपने आसपास अगर पॉपुलेशंस का मुआयना करें, इफ वी ऑब्जर्व पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज अराउंड अस या बियॉन्ड अस, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मिलती है. नाउ एज ऑलवेज, एज इज द रूल, वी आर गोइंग टू रिपीट द मंत्र, द टैगलाइन ऑफ इकोलॉजी. That is to make the class auspicious, है ना? What is ecology? It is the reciprocal relationship between an organism and other species, other organisms, as well as the interaction of an individual or an organism with the physical environment. Yeah. So now, if I talk about bacteria growing in a nutrient medium, if I talk about paramecium growing in a nutrient medium in a lab, then at some point of time, I might see that it is an exponential or the geometric growth. Yeah? Geometric growth means it sees, after a short lag phase, it sees a very drastic log phase, exponential growth, because bacteria are quickly dividing by binary fission using all the nutrient medium. We also got the equation for exponential growth, which is NT equals to N naught ERT. Now here my matter of interest is the R, and I explained you very, very carefully, very, very worth noting down concept, that this R
decides the fitness of a population. People, as we grow up and mature in the studies of ecology, we realize कि भाई अकेला कोई भी नहीं रह सकता है. Ecology is never studied at the organism level. Okay, for example, when you study how circulatory system works or how reproductive system works, अभी आप पढ़कर आए हो zoology में, आप एक सेल की बात नहीं करते, आप सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, उनकी बात करते हो कि भाई हार्ट है और हार्ट के साथ जुड़ी हुई आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वेसल्स हैं. उसी तरह जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं कि भाई फिजिकल एनवायरनमेंट से या दूसरी स्पीशीज से किस तरह का रिश्ता है, वो एक पॉपुलेशन की सेंस में पढ़ा जाता है. इज दैट क्लियर? तो मैंने ये देखा कि एक पॉपुलेशन की फिटनेस, मैं बार बार आपको हर क्लास में ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूं बिकॉज वी आर लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी. So R is nothing but the biotic potential और reproductive potential. ये population कितना maximum grow कर सकती है with the given environmental conditions, with the given resources. For my new students, resources in ecology means food, shelter, space, mating partner. Shelter and space is the same thing. It is roti, कपड़ा, मकान. हाँ, तो कपड़ा नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं food, shelter. The organism needs space and organism needs a mating partner. So this R really defines the health of a population. लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन यही exponential curve suddenly zero पे पहुंचती है. It is a sudden fall in the population growth. हाँ, क्योंकि एकदम से न्यूट्रिएंट मीडियम खत्म हो जाएगा, इसीलिए जे शेप्ड कर्व या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व नहीं माना जाता है. इट कैन ओनली बी प्रेवलेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. सो व्हाट इज मोर आइडियल? भाई सच्चाई क्या है? अच्छा बच्चों, जिन लोगों का 2022 को लेकर कुछ सवाल हैं, है ना, थोड़ी बात मैं अपने इन सेशंस में कर रही हूँ, टीचर्स करेंगे, लेकिन 2022 का इन डेप्थ एनालिसिस, उससे क्या हमें सीखना चाहिए, क्या होगा, ऐसे पेपर में क्या करना चाहिए, इसके लिए आकाश बायजूस नीट पर सेपरेटली सेशंस होंगे विच आर स्टार्टिंग टुमारो. ओके, सो इट इज एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड अ मस्ट टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, टू लर्न फ्रॉम अदर्स, है ना. खुद चोट खा ली ना, सो वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम दूसरों की अचीवमेंट्स एंड मिस्टेक्स. तो इसलिए इन काउंसलिंग सेशंस को, इन स्ट्रैटेजी सेशंस को कि अब हमें 2023 के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, जरूर अटेंड कीजिए, सारे टीचर्स का अटेंड कीजिए. या आई होप टू सी यू इन दोज सेशंस, दे विल रियली बेनिफिट यू. क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके अगर सिर्फ सिलेक्शन होती तो फिर बहुत सारे डॉक्टर्स निकल जाते. What you need is a strategy, a scheme to get there. चाहे पेपर मुश्किल हो, चाहे पेपर आसान हो, सिलेक्शन कैसे पक्की करनी है, that is what we need to learn. So coming to logistic growth, population interaction से क्वेश्चन था by the way, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. इस सेशन से क्वेश्चंस 2 आए थे 2022 में. So in any population, in any given scenario, the truth is that nutrient space cannot be unlimited. There is a limit to everything. Okay, so considering that, what we see is a logistic growth model. What is a logistic growth model? Let's see that with the help of animations, है ना. Let's see that, let's see it happening. So all beautiful eyes on the screen and brains also on the class. Yeah, we are not going anywhere. So on the x-axis we have the factor of time, कि वक्त के साथ क्या बदलाव आ रहा है, किस में बदलाव आ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ में. ठीक है, अब मैंने अपनी तरफ से इसको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और रिसोर्सेज दिए हैं, स्पेस एंड फूड. सो व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. अब देखिए स्क्रीन पर क्या हो रहा है. सो यू सी इन द बिगिनिंग, या एट द पॉइंट ऑफ 0, I have a slight lag. It is slow, but suddenly I experience an acceleration in the population growth. I started
with a lag, although resource availability was maximum. Yeah, because the organism need to adapt to the environment and resources. But since resources are so available, what happens with me? I see an acceleration. But with that acceleration, people, this is the truth of existence in ecologically. Yeah, nothing is going to be there forever. So resources are used by this exponentially growing population, and they decrease. And when they decrease, I see a deceleration as well. A reduction in the population growth, क्योंकि अब रोटी कपड़ा मकान नहीं है. And finally, I reach something called as the asymptote. You see that? Maths में asymptote मतलब यहाँ पर अब कोई भी growth नहीं होगी. In fact, asymptote के level पर deaths will start happening, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी resources नहीं बचेंगे. So, यहाँ तक death इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पर आपको death of population दिखेगी. Is that clear? Now, this point where the curve goes stationary, asymptote तो mathematically हमने बोल दिया, maths तो हम सबका बहुत ही अच्छा है ना? यार ये point of that population is called as K, or one of the favorite questions in boards as well as NEET is what is K? K is the truth of existence, ecological existence. Truth of existence तो खैर समझना उसके लिए तो book है ही नहीं, है ना? So this K is the carrying capacity, my people. It is the carrying capacity of the environment. What is carrying capacity? Yeah, carrying capacity is when population density. How do we represent population density? Boys and girls, it is represented by N. Yeah, population size. When it reaches carrying capacity, it is already maximum. That is, this population has achieved its R. No? Now books are not going to say it this way, but the question is going to come this way, and I'm going to be solving MCQs right here today itself. तो class छोड़ के मत जाना. कुछ मिनट में, 10 मिनट में मैं previous NEET questions के MCQ करवाने वाली हूँ. इसमें से tricky questions आते हैं. Okay? And things have changed. Now paper is going to be tricky henceforth. Once again for all of you, K, or carrying capacity, is the maximum amount of resources a particular habitat can provide you to grow, to reach the biotic potential. This is biotic potential. We have discussed this in the last class. Biotic potential मतलब आराम से मजे से population रह रही है, reproduce कर रही है और बढ़ती जा रही है. लेकिन environment बोलेगी बस और नहीं, मेरे पास और है ही नहीं. We are actually in this state right now. इसीलिए we have diseases, yeah, the pandemics, we have lot of things, earthquakes, tsunamis and all that. It's all very related. That is how environment responds. When it has reached the carrying capacity, I told you deaths will happen. Because it cannot support increase in population further, hence I get this idea. This is a previous year question. Population density is now equal to carrying capacity of the environment, of this particular habitat. Or in other words, at this point of time, the population has reached, ये नहीं लिखा है textbook में, population has reached the maximum R, or the, what is R? Intrinsic rate of natural increase, पिछली class से. Intrinsic rate of natural increase related to birth rate. That is done. इससे ज़्यादा अब अगर बढ़ोगे तो फिर मरेंगे लोग. लोग नहीं, कोई भी population, मच्छर की population है, खटमल की population है, plant की है, humans की. That is the rule. With me everybody, let's look at the formula now. Now in this type of growth model, which is logistic, the factor of carrying capacity, or K, becomes important, comes in the denominator,
एंड ये तो आपकी वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है ना, लेकिन यहां पे आपने के वाला फैक्टर ऐड करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफाइन द पॉपुलेशन growth, the change in the density. Okay, then they will ask you what are the different phases. So as NCERT says, we will follow that. What are the different phases भाई? इसमें तो कोई नहीं था, लैग था और एक्सपोनेंशियल था. इधर हमारा कौन सा हुआ? लैग, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन. कम होता है, दैट इज द वार्निंग. डेसेलरेशन एंड हियर इज द स्टेशनरी. तो ये 4 फेजेस हैं, इसको जरूर पढ़कर करके समझ के बांध के जाइएगा जब भी एग्जाम होगा. और फॉर्मूला में से तो जिस दिन इजी पेपर आ गया अगर 2023 में, तो सीधा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला सिग्निफाइज दिस वन, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. लेट्स सी द चैट बॉक्स. Thank you, Medico. Good to see you. Lakshmi, Rani, बेटा any doubts? अच्छा, जब भी क्लास में मैम बोलते हैं are there any doubts, please tell me. Never ever hesitate to ask your doubts. Do not think what will this other person think, what will that boy think, girl think, what will ma'am think. I'm asking a stupid doubt. I will get to know when you're trying to understand. There is no question in the world that is stupid. A question is a question. Okay? So if you have not understood, it is okay to say, ma'am, I have not understood. Ma'am is here. But delaying it, letting the question be, is going to be a trouble. मुस्कान प्रीत मैम, जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है उसे क्या कहते हैं? द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल J-shaped curve. J-shaped growth, owing to the shape of the graph. You can call it J-shaped curve, J-graph, J-growth, exponential growth, geometric growth. This concept is there in plant growth regulators also, that chapter also. Purav is saying, ma'am question कराओ, confidence बढ़ेगा. बिल्कुल बेटा, अभी confidence बढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है. confidence हमें exponentially बढ़ाना है. कॉन्फिडेंस, तैयारी में कॉन्फिडेंस के लिए लॉजिस्टिक कर्व नहीं होनी चाहिए. डेसेलरेशन इज नॉट अलाउड, स्टेशनरी इज नॉट अलाउड. इट हैज टू बी अ जे शेप्ड कर्व. ओके, जूही याद नहीं है यार एग्जैक्टली. आई डोंट वांट टू से अ रॉन्ग नंबर, बट इट इज जस्ट इंक्रीजिंग. थैंक यू श्रद्धा. प्लीज शेयर द सेशन माय डियरेस्ट. ओके, वी गो फर्दर पीपल. We go further. Thank you so much. I'm fine. Okay, let's go further. We are good. यार अब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो NCERT ने बड़े प्यार से लिखी है. I love NCERT for such intelligent remarks sometimes. Remember that population ecology is not different from the concepts of evolution and population genetics. बोले तो I explained this in the previous class. इसका ये मतलब है कि एक पॉपुलेशन का आर या पॉपुलेशन की ग्रोथ मुझे ये बताएगी कि इस पॉपुलेशन में जीनोटाइप्स कौन से हैं, इस पॉपुलेशन में कितने सूटेबल जीन्स हैं. और डार्विन अंकल ने बोला कि भाई जिस पॉपुलेशन में सूटेबल जीन्स यानी कि वेरिएशंस है, मान लो तुम्हें जेनेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, आई एम यूजिंग अ वेरी सिंपल टर्म, आने वाले टाइम में यू विल बी एबल टू रिलेट दिस. सो जिस पॉपुलेशन में जितने अच्छे सूटेबल जीन्स हैं, दैट पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर, द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Species and population understand this fact and hence comes the concept of, इसके बाद मैं questions करवाने वाली हूं, ध्यान से सुनना. It is called as life history variation. So every population is trying, listen to this, every population is trying to reach maximum
maximum what are. हर पॉपुलेशन की ये फितरत होगी, ये आदत होगी कि यार हमें कोई मार ना सके. किसी भी पॉपुलेशन को कौन मार सकता है? मैं ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही, पॉपुलेशन की बात कर रही हूं, राइट? बिकॉज दैट इज द रियल बिजनेस. किसी भी पॉपुलेशन को कौन मार सकता है? दूसरी स्पीशीज मार सकती है, यानी कि मेरी लड़ाई दूसरे बायोटिक फैक्टर्स से है, और फिजिकल एनवायरनमेंट मार सकती है. ऐसा तूफान आया, ऐसा सुनामी आया, सबको मार के चला गया. ऐसा अर्थक्वेक आया, ऐसा पैंडेमिक आया कि सबको मार के चला गया. So we see variations, we see adaptations in the reproductive strategies of populations, so that irrespective of these struggles that I do, I still reach my maximum R. Every population, I'm saying जो कॉकरोच रात को दिखता है ना, जिसको देखकर we are like, oh my god, why? And our mothers is like, कॉकरोच आया क्या घर में, चलो अभी सफाई शुरू करो. मेरे घर में तो यही है, कॉकरोच नहीं आना चाहिए, एंजाइटी हो जाती है वरना. So my job is to report it to mum if I see a cockroach. I don't have cockroach in my house, but yeah, whatever, even a bacteria, even the virus which caused corona, every organism, well, that's not a living organism, virus is not considered as a living organism, will try to reach its R by adopting certain strategies. But the problem is ecologists, evolutionary biologists have not been able to predict or crack this strategy. समझ रहे हो? इसीलिए कोरोना was so unpredictable. इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जितना छोटा है ना ऑर्गेनिज्म, हमेशा ये बात याद रखना, वो कुछ भी उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा दिखता है. लेकिन दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन फॉलोड अक्रॉस द फाइला. फॉर एग्जाम्पल, नाउ द एग्जाम्पल्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू are previous year questions. Okay, and this is the part that usually everybody misses, studying and teaching. Okay, so we'll pay attention. Let's read it. There's no particular strategy, we don't know. Every organism has its own intelligence. Okay, so life history variations of organisms evolve matlab लगातार change हो रहा है. The conundrum here is constant change. Okay, so life history variations of organisms evolve in relation to what? What is the struggle? Imposed constraints of abiotic, biotic. Now it makes sense. I've explained it to you. If you're hearing me, it's going to be malai. अगर ना सुनने की गुस्ताखी करोगे, तो यही चीज struggle बन जाएगी. यही चीज तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी. That is the thing about ecology. Okay, so impose constraints of abiotic and biotic components of the habitat. So what are the two strategies यार? अभी तक organisms ने क्या दिखाया है? या तो breeding frequency को modify कर दो, या फिर number and size of offspring को modify कर दो. It is based on the environment in which we are, not we, in which the organism is living. Let's see some examples. अच्छा, इसका क्या रीजन है, क्या हो रहा है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है. तो बैठकर ये ना सोचें कि अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ, फिर क्यों हुआ. द रिसर्च इज गोइंग ऑन. NCERT says this clearly. The research in life history variations is still on. Nobody understands that bamboo plant, yeah, monocarpic, decided to reproduce only once in lifetime, फिर मर जाता है. Same is with Pacific salmon fish.
But on the other hand, birds and mammals thought कि यार हमें environment से, I'm just assuming, they thought, mammals like us, कि यार अपने पे बहुत pressure है, अपने को environment से बहुत लड़ना है, we should be able to reproduce multiple times in life. So that if one progeny is not surviving the harshness of the environment, the other will. And that is true. Till we didn't have the medical facilities like we have today, this was happening. Children used to die. Isn't it? Next, people. एक और strategy कुछ organisms की है, large number of small sized organisms. For example, oyster and pelagic fishes. These examples you have to learn. Ma'am is not troubling you with the examples. It's the NCERT that is speaking about them. And mammals and birds produce small number of large-sized offsprings. चलो, अब क्वेश्चन आ जाता है जो शायद ये वैल्यूज आपकी NCERT में भी दी हुई है. अभी जूही ने इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा था. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. लेट्स सी द चैट बॉक्स. पीपल, let's practice the questions on the topics that we have already done. First question, give me the answer. हाँ, ये क्या चल रहा है भाई? हाँ, answer to this question. आर्यन, बहुत अच्छे काम कर रहे हो यार. You will be proud of yourself years from now, won't you? Okay. लेकिन अगर ये कोशिश करोगे कि मैम की क्लास पर रत्ती भर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो बेटा वो नहीं होने वाला. ओके, सो दिस वी डिड इन द लास्ट क्लास कि आर की वैल्यू कैसे वेरी करती है. दीज आर द एग्जांपल्स गिवन. हाँ, सो वी कैन सी दैट फ्लावर बीटल हैज क्वाइट अ हाई आर वैल्यू. दे आर इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट इन द गिवन स्पेस एंड टाइम. या तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था. नीट 2020 का क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन. अभी मैंने इस बारे में बात की है. स्टेशनरी फेज कब आएगा? I just spoke about it minutes ago. Guys, please hit the like button and share the session with everybody. Do good and good will happen to you. Thank you. Thank you for correct answers. Finally. तो यार जब environment की carrying capacity पर हम पहुंच चुके हैं, हमने उसके सारे resources, सारा कुछ use कर लिया है. When population density reaches that stage, यानी कि अगर सिंबल्स की फॉर्म में बात करें मैम, तो इट इज k इक्वल्स टू n. दैट इज कॉल्ड एज, इकोलॉजिकली इट इज कॉल्ड एज द एसिम्प्टोट और स्टेशनरी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. So when it comes to mathematical expressions, you should be aware of what is the symbol and what is it signifying. With me on this, now comes the topic of population interactions. Super important. There is not a paper in NEET since I am teaching. हाँ, मुझे अपने एग्जाम की तो याद नहीं है, लेकिन 2012 से आज 2022 तक मैंने कोई पेपर नहीं देखा है, चाहे वो स्टेट पीएमटी हो, चाहे वो एआई पीएमटी हो और अब नीट हो, जिसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्वेश्चन ना आया हो. You can open up previous year papers and see it for yourself. And the topic is so interesting and makes sense because we see it happening every day. So let's dig in deeper. Put the beautiful topic, a beautiful heading in your notes. I tell you, more pointed, easy to grasp notes you have, the better your notes are. It is really going to help you in your preparation. जिस बच्चे के भी नोट्स अच्छे होते हैं ना, वो यूजुअली सब्जेक्ट को समझ ही लेता है. हाँ, so population interactions, let's study. Come, we'll do it. We'll start. आज हम
सबसे बेसिक हर वक्त चलने वाली जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम अपने आप को ये रियलाइज करवाएं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म से तो हम मूव ऑन कर चुके हैं, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ पॉपुलेशन। तो अब हम ये भी जान लें कि कोई भी पॉपुलेशन, चाहे वो कितनी सुपीरियर हो जेनेटिकली, है ना, चाहे उसमें कितनी ही अच्छी वेरिएशंस हो, लेकिन वो अकेली अपने ही दम पर नहीं रह सकती। नो पॉपुलेशन, however superior genetically it is, cannot survive independently or in an isolated manner on its own. Sometimes we're not able to see the interaction. It is unspoken. It is not evident, but we are always interacting. And the existence, the truth of existence is, ecological truth of existence is, we are in a web of interactions. All the interactions are not going to be beautiful, easy, positive interactions. It is as simple as in a classroom, with certain one or two people, you are best friends with them. You really like them. You have a sort of a give and take kind of friendship. You guys share a lot. You guys share notes. You guys share good news, bad news. That kind of a friendship. Certain people are, okay, hello, how are you? Yeah, these kind of friendships. But there are certain people, कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बनती नहीं है, या वी आर लाइक नहीं यार, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, हमारे झगड़ा हो जाता है जब भी हम बात करते हैं, दिस पर्सन यू नो पिसेस मी ऑफ। बट उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोलॉजिकली भी ऐसा होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस विल इज द ट्रूथ, बिकॉज देयर इज सम फ्रेंडशिप, देयर इज सम इंटरेक्शन विच इज नेगेटिव, you are able to appreciate the positive interactions. Why are you able to pinpoint and say this person is a good friend of mine? Because you know what is not good. It is as simple as that. Okay, so let's start the topic of population interaction, understanding that even an independent autotrophic organism like a plant, which can make its own food, which does everything for the planet, is dependent on the bacteria, fungi, algae. Bacteria and fungi which are present in the soil as decomposers. You have studied in class 11th. The slime molds, yaar. Remember the chapter of biological classification? Do you? Little bit. The fungus saprotrophic nutrition. If these organisms are not there in the soil, who will degrade? Who will decompose the complex structures into simple inorganic substances? अरे भाई, सॉयल में मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर याद करें, अगर सॉयल में मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, आयरन नहीं है, बोरॉन नहीं है, तो प्लांट कैसे बढ़ेगा? फोटोसिंथेसिस तो दूर की बात है, वेजिटेटिव बॉडी नहीं बनेगी, सीड की जर्मिनेशन ही नहीं होगी। और उसके बाद ये तो बड़ा एक अनसीन सा रिश्ता है। अब प्लांट्स को खाने वाले और प्लांट, अगर प्लांट को हर्बीवोर खा रहा है तो हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहा है, ये तो हमें फिर भी दिखता है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स रियलाइज दैट इवन प्लांट्स नीड soil microbes and insects. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, we need pollinating agents in case of plants. Sexual reproduction ही नहीं होगी, life cycle ही complete नहीं होगा if I don't have insects, if I don't have birds. And not only that, people, let's not forget that seed dispersal is very important. So it is both pollination as well as seed dispersal. I'm going to add the point here. Arre. Yeah, this you can see. यार, तुमने कभी सोचा है ये बात कि प्लांट ने अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, अच्छे खासे सीड्स प्रोड्यूस किए, और यार सारे सीड्स एक जगह पे गिरा दिए, तो क्या होगा? पता है क्या होगा?
उसमें से हार्डली 5-10 सीड्स जिंदा रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इतने से स्पेस में इन सारे सीड्स को सनलाइट, वाटर, स्पेस के लिए लड़ना है। भयंकर कंपटीशन होगा। तो इसीलिए एंजियोस्पर्म्स आर वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इवन जिम्नोस्पर्म्स फॉर दैट मैटर, बट वो इतने फैले नहीं हुए कि एनिमल्स, बर्ड्स लव टू कैरी सीड्स ओवर ह्यूज डिस्टेंसेस। Makes sense? So don't miss this point. Pollination as well as seed dispersal. If you look at the small ecosystem, don't look at me, look at the ecosystem. There's a lot to look and learn. And you can do that only on the platform of Aakash BYJU'S NEET, I can assure you. Try it out for yourself. Nobody is showing you ecology happening. Syllabus will be completed everywhere, anywhere. It is easy. But what you see happen, you see it happening, you're not going to forget it. Okay? So in this ecosystem, I can easily see that it is a web of interactions. अब कार्निवोर हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोर प्लांट पर डिपेंडेंट है, और ये जो कार्निवोर है इसको खाने के लिए टॉप लेवल कार्निवोर वेट कर रहा है, जब तू मरेगा मैं तेरे को खाऊंगा। तुम कितने भी ग्रेट हो, बट जब तू मरेगा देयर इज समबडी वेटिंग टू ईट मी। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स, द फीडिंग हैबिट्स फर्दर एनहांस दिस वेब ऑफ इंटरेक्शन। और ये प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं? जब ये मरेगा, जब ये ऑर्गेनिज्म मरेगा, इनमें से कोई भी मरेगा, उसकी बॉडी को डिग्रेड करेंगे डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज करेंगे, तब न्यूट्रिएंट्स आएंगे और ये पेड़ वापस आएगा। सो इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ साइक्लिकल फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ थिंग्स, न्यूट्रिएंट्स, अ साइक्लिकल रिलेशनशिप। Yeah? So having realized that, what we are going to study is the interspecific interaction. Interaction of population of two different species, however far apart they are structurally. मैम पेड़ और बेयर में क्या रिश्ता है? हाँ मैम, पेड़ और फॉक्स में क्या रिश्ता है? रिश्ता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। So today we understand that there is a unspoken or a very spoken evident relationship which can be beneficial, detrimental, or neutral. Like I said, my best friend, yeah, okay, we just meet every day. I don't like this person. Yeah? So these are the three kinds of interaction. Now we are going to build a box together. Are you ready? This box is going to help us labeling the nature of an interaction. Yeah? Are we ready, people? Eyes on the screen. Eyes on the screen. Yeah? So we take into account that there are two species interacting. Huh? So first is mutualistic relationship. This is the closest friendship in nature. Sometimes it becomes obligatory. What is obligatory? Necessary. जन्म जन्म का साथ है, मैं जी नहीं सकता. I cannot live without this organism. That happens when life cycles are dependent on each other. इसके examples भी हम देखेंगे. Very, very important for NEET exam. Okay? Ma'am will teach you very, very nicely. I'm not going to let even a single question run out of your hands. Whether you're sitting in 23, 24, 20, 30, whenever. उसके बाद आ जाता है जी कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है. If it is such a positive interaction, क्या होता है? जाहिर सी बात है, यहां पर दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है. हाँ, फायदा होने के अलग लेवल्स हो सकते हैं. ठीक है, सिंपल फायदा हो रहा है, नहीं भी होगा तो चलेगा. और एक होता है ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी मतलब नेसेसरी, इसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता. सो वन सच एसोसिएशन वी सी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइकेंस. आप उसको सिम्बायोसिस भी बोलते हो. एक्चुअली सिम्बायोसिस इज अंडर म्यूचुअलिज्म. इसमें कई टाइप्स आते हैं, प्रोटोकॉपरेशन, सिम्बायोसिस.
वी कीप इट सिंपल. आपके सिलेबस में अब नहीं है, वेरी गुड फॉर यू. फॉर अस इट यूज्ड टू बी टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म एज वेल. माय गॉड, आई रिमेंबर माय स्टूडेंट डेज नाउ. सो लाइकन हम सब जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज अ symbiotic relationship or friendship between the fungal and the algal component. And the fancy terms are, what is the term for algal component? Phycobiont. What is the, क्या ये सबको याद है? कोई है जिसको अभी तक याद नहीं है? पूरव ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है. देखो मैंने तुम्हारे दिल दिमाग की बात सुन ली. I just answered it. Are you good now? Yeah? So, Juhi, could you calm down and maintain the pace? It will be good for you. So, बच्चों हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि lichen is a very, it is not even a part of biological classification, R.H. Whitaker's classification. It is an exception. बड़ा ही intelligent organism है. Ecologically also, lichen is a super intelligent organism. इसमें fungus or the mycobiont is the major portion. 80% of the lichen is fungus, dominating organism है ये. फंगस की बॉडी बनी होती है हाइफे की, थ्रेड लाइक हाइफे. तो ये सॉइल में तो नहीं ग्रो करता है, रॉक पे ग्रो करता है. ये पूरी तरह अपने हाइफे फैला लेती है. एंड ऐसा माना जाता है कि इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द रॉक एंड फर्दर फॉर्म सॉइल. फंगस बीइंग अ डीकंपोजर हैज स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मैं यहां पे इनके रिश्ते के बारे में लिख देती हूं और वी हैव द एक्सप्लेनेशन कि क्या फायदा हो रहा है एक दूसरे से. सो फंगस इज हेल्पिंग द एल्गे विच इज अ मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम, विच इज क्लोरोफाइटिक, विच इज ऑटोट्रोफिक. उसको फोटोसिंथेसिस करना आता है. फंगस को क्या आता है? फंगस को डिग्रेड करना आता है. फंगस को डीकॉम्पोजिशन बहुत बढ़िया आती है और उसकी बॉडी एल्गे से ज्यादा सिंपल है. भाई आई बात समझ में? तो फंगस अपने हाइफे पत्थर में घुसा लेती है, वहां से बड़े टफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स निकाल के लाती है और एल्गे को दे देती है. ओके, सो नंबर 1, व्हाट इज फंगस डूइंग? न्यूट्रिशन. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, आई एम गोना राइट इट. न्यूट्रिशन, शेल्टर and water absorption to some extent. So all these three are not written, but it is a previous year question. पानी एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है क्योंकि एल्गी के पास तो रूट नहीं है ना बाबा. एल्गी इज अ थैलॉइड ऑर्गेनिज्म. कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद हमारा आ जाता है फाइकोबायोंट स्ट्रक्चर विच इज एल्गी. एल्गी सिर्फ इसको शुगर्स दे रही है, ज्यादा काम ये कर रही है. एल्गी इसको बोल रही है थोड़ा बहुत खाना ले ले, जो भी मैं बना रही हूं फोटोसिंथेसिस से. इज दैट क्लियर फोक्स? नाउ वी ऑल्सो सी फंगल एसोसिएशन with the roots of higher plants, and that is called as mycorrhiza, another organism in biological classification which is not a part of R.H. Whitaker system. ये भी क्वेश्चन आता है, तो मैं क्लास 11th और क्लास 12th के टॉपिक को, क्वेश्चंस को लिंक कर रही हूं. चमका या नहीं चमका? mycorrhiza is not a part of any kingdom बाबा. So both are examples, और दोनों में फंगस है. माइको बोले तो फंगस, राइजा बोले तो रूट्स. अपने को हायर प्लांट्स, हाँ एंजियोस्पर्म्स में भी मिलता है तुम्हें, ये जिम्नो में भी मिल सकता है. माइकोराइजा आपको मिलता है जिसमें हायर प्लांट्स बोलते हैं कि यार अपने को एक्स्ट्रा मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, अपने से नहीं हो रहा है, सॉइल में से नहीं निकल रहा है, दे आर टाइटली बाउंड. देन दे से फंगस प्लीज हमारी मदद कर दो. But this relationship is not as strict and as obligate, as codependent as is the relationship between a plant and a pollinator. And that we are going to discuss in the next class. Okay? कि बिल्कुल ही एक दूसरे के बिना ना रहने वाली स्थिति. Okay? तो इसमें भी आप देखिए कैसा सिम्बायोसिस है. फंगस को शुगर्स मिल रही हैं, शेल्टर मिल रहा है, और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और पानी मिल रहा है. डू यू वांट मी टू राइट इट? व्हाट डू दे गेट? गेट न्यूट्रिएंट्स, एडेड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर
get added nutrients and water, and fungus gets shelter and sugars. Cools? Works? So we'll end the session here today. And I'll see you in the next class. Galti se bhi miss mat karna. We are going to take mutualism further. Take care of your health. We are going to solve more and more questions. If you still have any doubts and concerns, put them in the main comment section. If you have not subscribed to the channel, subscribe it right now. Like the session, share the session with everybody, and keep smiling.